when I heard the script, जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी तो हमको समझ ही नहीं आया कि किस लेवल पे ये स्क्रिप्ट जा रही है. रियली फनी, रियली फनी. और हम अगर आप लोगों को प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर का ह्यूमर अच्छा लगा है, तो ये आई थिंक कुछ दूसरे ही लेवल पे है. कुछ लोग इस फिल्म को ऐसे देखेंगे, क्या हो रहा है इसके अंदर, व्हाट इज हैपनिंग, कि गैलेक्सी का ह्यूमर है क्या. और कुछ लोग इसमें हंस हंस के गिर जाएंगे क्योंकि इसके गैग्स, इसके पंचेस, परफॉर्मेंसेस आर फिनोमिनल. और अलग फिल्म है. एक नवाज भाई, एक वानबी गॉल्फ तो बाद में आता है. ही इज अ एंटरप्रेन्योर ऑफ अंडरगारमेंट्स, स्मॉल टाइम भाई, एंड गली क्रिकेट के चैंपियन है. एंड देन इनको एक एक्सटॉर्शन के केस के अंदर इनको एक गोल्फ खेलने का चांस मिल जाता है और उस बॉल को खड्डे में डाल देते हैं. वहाँ से इनका करियर शुरू होता है. एंड फिर हमारे जो जज साहब हैं, इनकी और उनकी भिड़त हो जाती है. एंड देन द स्क्रीन प्ले, द इमोशंस टू इट, एंड द ह्यूमर एंड द फन एंड द स्पोर्ट. तो इसमें हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है म्यूज़िक के साथ. इट्स रियली फनी. You know, the uniqueness of this film is that जब हमको स्क्रिप्ट मिली तो जो मेरे AD है अली, the associate director of the film, उन्होंने कुछ 65 days का ये किया था, scheduling किया था. And 65 days has been the shortest film that we've ever attempted with our production. Thanks to Mahesh. Mahesh, please can you have on stage, Mahesh? अभी मैं महेश की थोड़ी रेपुटेशन खराब करने वाला हूँ. अभी जो भी इसे साइन करेगा वो 40 दिन में फिल्म बना देगा. 40 दिन में बना चुके हैं और दबंग 140 दिन में भी बना चुके हैं. We were very well prepared with this film. So we used to roll at 7 o'clock in the morning, and there were very few locations. So we actually managed to pull the film because it was Oxford golf course that we shot at, and there was JP Greens and JP Wishtown in Delhi. And there was no confusion while shooting because I'll get somebody up on stage also who was a golf consultant to us, and we were very clear in what we wanted to shoot because golf can be a very complicated game. It is a complicated game. In fact, our first teaser went like this that confuse mat kar, sirf ye bol कि ball को खड्डे में डालना है ना. So that was the first concept of the one line. But I want to get somebody on stage as Siddharth, and who made the sport easy for us, and he was a golf consultant with us on every day of the shoot. So we shot very precisely and with his advice. So technically we've got, we didn't want to go wrong with the format of the game. And we wanted to use the technicalities of the game where any golfer also will say that, okay, fine, you can't show the full game, but if you jump, technically we were right. किक में भी साथ में थे, वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है. अब शाहरुख खान के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर वैसी रिलेशनशिप होगा जैसे कि मेरे साथ है. हाँ, आप देख रहे हैं पर्सनालिटी तो सेम ही है. हाँ, आजकल बल्कि मैं नवाज हो गया हूँ और ये सलमान हो गए. मैंने एक दिन मैंने बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं. इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा. आप जानते हो कि मैं नवाज भाई को पहले कैसे मिला. मैं किक देख रहा था और मैं सब बच्चों को अपने साथ ही गया था. साजिद भाई की ट्रायल थी यशराज में, तो मैं सब बच्चों को पूछा था इंटरवल पॉइंट में, क्या बच्चा देखो क्या चाहिए, बेटा देखो क्या चाहिए. तो मेरे आसपास बच्चे बैठे थे, तो मेरे सामने भी एक बच्चा बैठा था, तो मैंने हाथ डाला ऐसे, बेटा तुझे क्या चाहिए. वो नवाज भाई थे. तो जब नवाज भाई टर्न किया, अच्छा सॉरी नवाज भाई, चुपचाप बैठे थे नवाज भाई. सेट पे भी ये जब आते जब जाते पता नहीं लगता, हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो सामने खड़े हमारे हमारे सामने खड़े हैं. एंड ही इज द मोस्ट हम्बल नाइसेस्ट पर्सन टू वर्क विद. बोलते हैं ना चोर बॉडी है.
इनकी चोर पर्सनालिटी है, पता नहीं लगता कब आए कब गए। और इस फिल्म की एक खासियत है कि हमने इस फिल्म के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, हर लुक, फ्रीकी लुक्स, हर साइज, हर उम्र के लोग लिए हमने। एक विचित्र काइंड ऑफ कास्टिंग है जो आपको ये पिक्चर में दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको हम दिल्ली से ढूंढ के लेके आए, फैशन वर्ल्ड में घुस गए थे, एंड देन वी थॉट के वापस से क्यों ना, बहुत मेहनत की उन्होंने लुक पे। हाँ, चूँकि मैंने कभी गोल्फ इससे पहले खेला नहीं था, पहली बार, तो इसलिए बहुत टेक्निकल गेम है तो सीखना तो पड़ता है। तो हम लोग सिद्धार्थ के साथ काफ़ी प्रैक्टिस की यहाँ पे चैम्बूर में, और फिर दिल्ली में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उससे आई थिंक 10-12 दिन शूट प्रैक्टिस की उसकी हमने। No, I think there's so much of crowd now, there's so much of traffic now. Every Friday has got some release. What we actually banking on is the title is Freaky Ali. It's 9 September. It's the second Eid of the year, and it's Bakri Eid. So, and it's a long weekend. We strategically market where the market strategy was concerned. We planned it that way. So we always had planned that. And there's enough space for 2 films. Inshallah, I hope for Farhan and Excel that even that film does well and we do well, because they both are of a certain genre. Okay, Katrina does well, Siddharth does well, Arbaaz bhai does well, Just does well, Nawaz does well. We all do well. We all do well. So yeah, and I don't think both are such big releases. They've got a niche audience, and there would be space for both of us. It's not a clash. It's not a clash. There's no clash at all. If you want to make it a clash, make it a clash. But there's no clash at all. And we hope that Katrina and Siddharth's film also does well. And Farhan is also like a kid brother to us. He's Javed Saab's son. So we want both these films to do well. And it's a good day to release these movies. And they're not like that 4,500 screens release that we don't have those many theaters for 2 films to release. So I think both the films have got the amount of theaters, and both are different kind of movies. So I'm sure the audiences will go and see one and then the other. Now, which one they prefer to see first, that is left up to them. Okay. Well, I actually fell in love with Arbaaz on screen in Gangs of Wasseypur. So my love story started there with him. And I must admit, I was quite nervous to act alongside him because I know what an excellent actor he is, basically. More than Akshay Kumar. Very different. And I must admit, Nawaz has taught me a lot throughout filming. And he's so intense. He's taught me about my Hindi and how to interpret different things. And I actually don't know when he's acting and when he's not acting. It's that real. So I've taken a lot from our romantic trip of Freaky Ali. So. Nawaz, आप भी कुछ बोल दो, please. Your turn. Yeah. It was wonderful experience working with Amy. Yeah. The scene also taking वसूली with Arbaaz, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे नवाज आप? क्या किसके बारे में? आप वसूली कर रहे थे वो पारसी लेडी से। हाँ, हम लोग गए थे ना दोनों। हाँ, तो मिला एक्जेक्टली कुछ नहीं मिला वहाँ पे, खाली हाथ वापस आ गए। गोली खाए, और एक ही आदमी जिस दिशा में गोली जाती है उसी दिशा में आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर, उसी दिशा के अंदर डाई मारते हैं वो अरबाज खान। इसका जवाब आप ही मुझे देंगे। इसका जवाब है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। आपसे देखिए पहले तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आपको रियल एस्टेट चाहिए, गार्डन चाहिए, ओके? उसके ऊपर से द गार्डन हैज टू बी इक्वल, फिर वहाँ पर पानी, लैंडस्केपिंग, ये तो हुआ। बगल के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वे पीपल सिट डाउन वगैरह वगैरह। तो जैसे कि 18 कोस्ट गोल्फ क्लब है, वो 18 कोस्ट गोल्फ क्लब मुंबई में इस वक्त पॉसिबल है नहीं है।
दूर दूर भी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर ये स्पेस पॉसिबल है। फिर वो बॉल्स, क्रिकेट में एक बॉल होता है, यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स होते हैं। क्रिकेट में एक बैट होता है, यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स होते हैं। फिर एक आदमी के साथ दो दो आदमी चलते हैं। फिर वो गोल्फ कार्ड्स होते हैं। तो ये गेम बेसिकली मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था वॉकिंग के लिए। अब वो इतने अच्छे बड़े प्रोफेशनल लेवल पर आ गया है कि इट इज़ बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग स्पोर्ट राइट नाउ, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट राइट नाउ आफ्टर क्रिकेट और बिफोर क्रिकेट इवन। यहाँ पर क्रिकेट है लेकिन बाहर गोल्फ ही है। अब जैसे हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल है, अब बास्केटबॉल तो हम लोग यहाँ पे खेल लें, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें एक पोल के ऊपर, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें पोल के ऊपर, आबादी इतनी है कि 11 वहाँ पे चले जाएंगे, 11 यहाँ पे चले जाएंगे। But who asked this question? Just you, right? You know, it's a very valid question, and that's what the film is all about. That there's a perception of golf, or tennis, or billiards, you know, where only the elite plays the game, and that's exactly what we have tried to break in the film. No, so do you think the elite really looks down upon a poor man when he tries to enter that zone? No, that's just his character in the film as a personality. That is him. That is him only. No, that's a why we got the character. real That's a casting character for in the film. But what we want to show is that it's not only golf. It's मौका सबको मिलना चाहिए, and how it's this man's journey from rags to riches, and he goes ahead and plays the game. So it's a very inspirational story. It's not looking down upon anything. That is basically his character is arrogant in the film. You have other golfers in the film who are very supportive towards Nawaz bhai playing, the character of Ari playing, and reaching tournaments and encouraging him. It's just that he's produced in the film. That's as his character. Okay. But these sports are expensive sports to play. Now, romance. I see one tube light there. फ्री की अली की प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे चले गए ट्यूबलाइट के ऊपर। जब ट्यूबलाइट का टाइम आएगा उसको अभी से ऑन करेंगे, टिमटिमाते वो जल जाएगी, उस वक्त टाइम है उसके लिए। But will you be romancing a Chinese actress? Man. Some update. Let's stick to the movie, please, right, guys? I'll give it to you later. के बारे में बता सकते हैं जो फिल्म में काम करने के बाद आप शेयर कर पाए हमसे? एक डायलॉग है इसमें जो चड्डी वाला, वो बहुत डिफिकल्ट था। वो सुनाऊं कितना डिफिकल्ट था वो? हो जाए, come on! चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर डिजाइनर साइज फ्लेवर के चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी ग्रिल मिल गए, हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, छोटे नौ डोरेमोन, छात्रों के बॉडी के लिए टाइगर प्रिंट, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर। Well, I wanted to be a part of this one. He didn't want to, and categorically he said, "No, bhai, this is I'm not." I said, "कुछ भी दे दे इसके अंदर यार." He took him, but he didn't take me. And जब हम लोग ने कहानी लिखी, I had a thought, and I had the thought, I had an idea, so I had done the basic casting of it, and then जब मैंने राज को बुलाया, and when I narrated the story to him, and I told him that मैं अभी तक नवाज भाई से मिला नहीं हूँ, but I've got Nawazuddin in mind. So when he penned the film, he penned him according to watching his work and stuff that way, so it fitted like a glove. So जब हमने नवाज भाई को बुला के उनको कहानी सुनाई, even he identified with it right away. So I just think, you know, in a journey, things just get together. We just have to work towards it, and then, you know, things find its own path. Okay, the first one is that I play a character called Maqsood in the film. Maqsood is a friend of Nawaz Ali's character in the film, who's also a kind of a sidekick. And he is a small-time gangster. He's like a petty thief. He's like is into extortion and all that. And when Ali runs into a bit of trouble, he wants to help him out and get him out of it. And we have a very strange kind of a friendship that will be unraveled in the film. हमारे बीच में तकलीफ भी हो जाती है, एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है. I do something which upsets him, and ultimately
if the friendship wins over, and I realize, and he forgives me in that particular moment. As far as Dabangg 3 is concerned, well, that is, this man is going to tell me when is the window, and he says otherwise he'll show me the door. कैसे सवाल पूछते हैं यार, भूल गया था दबंग 3 के बारे में, याद दिला दिया. But are you scripting the film? Is it being scripted? Yes, yeah, the brothers are working on the script right now.